they got this idea? Making an intellectually differently abled people to make as an advocate. Generally, they are called Buddhibadit, but their efforts and their beliefs, faith in them and in their talent has converted their ability despite the disability. A very happy moment is to understand that is managed by them, that organization, Safi organization is managed by the intellectually challenged persons. Please come to me. So this is a message to the society. They can do everything. Intellectually disabled need not be meant, need not be understood. As they do not understand anything, they cannot do anything. As Swami Vivekananda says, every soul is potentially divine. Every individual has got their own talent. Only the thing is, we need to identify and recognize it. The society most of the time fails to do it and tries to corner them and make them either useless or useless. So we require such an effort to spread out across the country and to be empowered through the concept of equipping and empowering Divyangjan to claim their own rights and to enable them to become an independent and autonomous for their livelihood, by their nature, by their attitude. This cannot happen only with the support of one NGO or few NGOs. It requires the cooperation of the whole society. As we have corporate social responsibility to support the efforts of organizations and individuals, that CSR through funding, I believe ISR is yet another term to be popularized, that is individual social responsibility to recognize the deprived or Divyangjan or any that kind of marginalized group, which would help them to gain the strength and regain what is felt to be lost. CCPD office, at this juncture I should tell you about our office, the functionals, and the speciality of the legal provision. So this office is created against a statutory provision which is called RPD Act 2016, Rights to Persons with Disability. 2016. Right? So it is a legal protection provided to the persons with disabilities. Earlier it was in 1995 there was a Persons with Disability Act, PWD Act 1995. Right? This RPD Act aligns the UNCRPD, that is United Nations Convention on Rights to Persons with Disabilities. Right? So under this office is established and it functions as a grievance mechanism or grievance redressing entity, under which one chief commissioner and two commissioners for persons with disabilities are appointed, and it is especially exclusively meant for the
for the persons with the disabilities to redress their grievances. As we have Child Rights Commission, Women's Rights Commission, Human Rights Commission, this is exclusively for the persons with the disabilities. So any person with a disability can approach against their harassment, deprive of any reservation, legal provision, or atrocity against them, right? Teasing, insulting, anything, whether it could happen in the general society, workplace, anywhere it could happen. That could be brought to the attention of this commissioner office, where they could get the remedy or relief. This office has got state level operation unit called State Commissioner for Persons with Disabilities across the nation, so which aligns the state government rules and regulations abiding the RPD Act 2016. Right. So it's a quasi-judicial power, and the another important thing is it has to monitor the implementation of the RPD Act across the country, and it has to monitor and ensure the effective implementation of the same. So with this high aim, this has been enacted, and it is being in effect for past 10 years. So that gave us the opportunity to solve a 7.5 year long can be mentioned as a fight against a simple request to rename or replace the word mental retardation to that of intellectually challenged or intellectual disability. So that gave me the opportunity, right? So that was originally opportunity provided by Pankaj Maruji and his daughter, who was the root cause for it. So somehow we have lot many things to solve like this. And though law speaks for the deprived or marginalized, society should speak for them. Unless the society or the fellow citizens do understand and talk for them, work for them, realize for them, a law will be a document, but not realized to achieve its original and sanctified objective. So, as he mentioned, only the media could educate the society better at large. Being the fourth pillar of a democracy, which could reach the public, rather the other three, much faster. So hope you would take this message and disseminate it for the benefit of the Divyangjan, and your interest and involvement is very explicit through your gathering here. For your valuable time is spared to listen us and to take message from us. So I personally thank every one of you for offering your valuable time for this noble cause. I'm prepared to clarify any questions you have. Universities and basic education, English literature, public administration, Master of Business Administration, and so many things I've done need-based, right? So basically, I was an administrator in a group of institutions in Madurai and Chennai,
And as he mentioned, I got the opportunity to serve honorarily with several committees pertaining to state government and central government. And I was really privileged to have an opportunity to serve in several NGOs, supporting several NGOs, and worked for one particular NGO for more than 15 years, where I started from the district responsibility to the national president. So that was the earlier journey, I could tell you. And I was so interested only to empower the different label, not actually, to some extent, I'm not favoring the charity-based or freebies, which would make them to feel comfortable, of course, but which will restrain them from taking efforts. Of course, the seriously affected, the severely affected people should be supported with all possible supporting system, assistive devices, who do not, who could not afford should be given free of cost everything to get rehabilitated or to get support. One more question is there. Yeah. But naturally, but the legal and all other aspects, but the central government has got several schemes, several projects to support financially and policy wise, but the implementing authority would be state government. अभी आपने बताया कि जो मारू साहब ने जो कैश Hearing challenged or something like that, and the locomotive, that is orthopedic handicap, was replaced to person with a disability like. But they failed to replace this particular thing, that is mental retardation, to that of intellectual disability. So that this I mentioned from 18 to 25. 7 साल Almost 7.5 years took अभी them तो to उनका क्वेश्चन भी बाकी है rectify. इसके लिए आपको मतलब कोर्ट, मतलब इनकी कोर्ट में आपको जाना पड़ा, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे सर ने कहा कि हमें न दया की जरूरत भी नहीं है, न कोई फ्री बीज योजनाओं की हमें आवश्यकता, लेकिन अब ऐसे में जैसे आप तो चलिए आप तो आयोग थे, आप भी एक बड़ी संस्था को रन कर रहे हैं, लेकिन एक जो छोटा आदमी जो सहयोग की अपेक्षा रखता है, वो कैसे किस तरीके से, मतलब आपने चलिए इंटरेस्ट ले लिया, आपने उठाया मामला, तो ये दुर्भाग्य, इसको लेके आगे से मतलब केंद्र सरकार अगर कोई बदलाव करती है तो वो एक साथ क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है सब जगह? निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, चूँकि जब पार्लियामेंट ने, संसद ने इस कानून को पारित किया और संसद ने ये डिसाइड किया कि ये शब्द यूज़ होना चाहिए, ये विषय जब आए अभी देश में, चूँकि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता था और बहुत कम लोगों को ये पता है अभी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति का जो एट्रोसिटी कानून है, वो की वही वर्ड्स उसके अंदर मेंशन किया है कि अगर सार्वजनिक जगह पर किसी दिव्यांग के लिए अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उस पर एट्रोसिटी लागू होती है। चूँकि समाज में जागरूकता का अभाव है, इवन दूसरे लोगों को छोड़ो, दिव्यांगजनों को भी ये बहुत सारे प्रावधान का पता नहीं, और ये पता ना होने के कारण वो उसको सहन करता हूँ। 7 साल एक लंबा समय होता है, जो देश की संसद से कानून पारित हो गया उसको रेलवे ने मानने से इनकार किया, और 7 साल तक उसी तरह मानसिक संतरास हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नेह के माध्यम से हम कल और परसों 2 दिन हमारा एक प्रोग्राम राष्ट्रीय अधिवेशन, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, और उसमें 20 राज्यों के 250 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे और उनके ट्रेनर।
वो प्रोग्राम बेसिकली 18 साल से ऊपर के जो बौद्धिक दिव्यांग हैं उसका एक हमने फोरम बनाया हुआ है, सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ऑफ इंडिया। ये भारत का एकमात्र बौद्धिक दिव्यांगों का रजिस्टर्ड बॉडी है जिसका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सब बौद्धिक दिव्यांग हैं। और वो सभी नागदा में कल रात से आना शुरू हो गए हैं। आज रात तक सारे लोग आ जाएंगे और कल और परसों 2 दिन उनका ये सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में वो अपने विचार रखेंगे, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि जनरली हम ये सोचते हैं कि बौद्धिक दिव्यांग कुछ कर नहीं सकता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। ये बनाया ही इसलिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। इसकी अगर आप थीम देखेंगे, स्पीकिंग अप, शेपिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़, यानी वो बोल के समावेशी समाज बनाएं। इस थीम के साथ ये 2 दिन का कार्यक्रम हमने रखा है। ये कार्यक्रम में हमारे कल के जो उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा सौभाग्य है कि इस देश के दिव्यांगजन आयुक्त के रूप में अभी कार्यरत डॉक्टर एस गोविंदराज जी, जो दिल्ली में आयुक्त हैं हमारे, और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके बारे में ये है कि 95 से आप लगातार इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। 2.5 वर्ष की उम्र में आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर आपने उन चीज़ों से हार ना मानते हुए अपने जीवन को न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए इतने काम आपने किए हैं कि भारत सरकार के अनेक कमेटियों में, चाहे वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हो, RCI हो, निपिड हो, अनेक नेशनल बॉडीज़ में आपने अपनी सेवाएं दी है। और वर्तमान में आप दिव्यांगजन आयुक्त के बारे में मैं बता दूं कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसमें एक प्रावधान है। उस अधिनियम को पालन अगर सरकार भी ना करे या कोई संस्था ना करे, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का पावर दिव्यांगजन आयुक्त को होता है। आप एक कोर्ट हैं और आपका आदेश मानना सबको पड़ेगा। मैं सबसे अच्छी एक और बात बताऊं, कल मैंने एक केस किया हुआ था हमारे बौद्धिक दिव्यांगों के लिए रेलवे बोर्ड के खिलाफ। रेलवे बोर्ड उनके जो कंसेशन पत्र होते हैं उसमें उनको लिखता था मेंटल रिटार्डेड, मानसिक रूप से विकृत। अब ये इतना खराब शब्द है, और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने बदलने से मना कर दिया कि इस वर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे राइटिंग में। तो मैंने केस आपकी कोर्ट में फाइल किया। कल आपकी कोर्ट से उसका जजमेंट पारित हुआ। उस जजमेंट में पारित होने के पहले ही जब पूरी प्रोसीडिंग हुई, हमने सारे प्रूफ दिए कि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर है। आपने उनको डायरेक्टिव दिया और उन्होंने, रेलवे ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। उसको बौद्धिक दिव्यांग के रूप में ही अब लिखा जाएगा, यानी उनका सम्मान बरकरार है। दूसरा, उसी में कैटेगरी थी ऑटिज़म, उसको भी वो नहीं देते थे, उसके लिए भी उसी ऑर्डर में आपने आदेश जारी कर दिया। देश में लगभग 2 करोड़ बौद्धिक दिव्यांगजनों को आपके उस ऑर्डर से एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ा काम हुआ। ये हमारा सौभाग्य कि वो ऑर्डर कल ही आया और आज सर खुद हमारे बीच में है। तो अब मैं आप दोनों के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं आप जो चाहें सर से पूछें। सर बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं इस क्षेत्र में। तो आप सब और सर के बीच जो वार्तालाप है मैं छोड़ता हूँ। मैं पहले सर से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ आप दें, फिर हमारे साथी लोग जो उनके प्रश्न होंगे